Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मेरा नाम गुरनाम है। मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कैथल गांव मटौर से आया हूं। प्रधानमंत्री के लिए यही संदेश है कि हम यहां जब से बैठे हैं ना, हमारे बारे में कुछ सोचे और कुछ कार्रवाई आगे की निकाले, कोई मसला हल करे हमारे। The road to the Singhu Border, the protest site at the edge of the national capital, where farmers have been on a sit-in for over 2 months now, is barricaded and cordoned off at least 10 kilometers ahead of the site. An explosion of broadcast vans and police personnel mark the last point till which a car can drive up. From here, you get off and you walk. Past fields and now closed street-side restaurants, harking back to a different, more peaceful time. On the way, we meet local residents from the adjoining villages who've had to walk for several hours in the opposite direction to even be able to catch a bus out. In a high-pitched, polarized public debate, from them comes dignified common sense. Respect the hand that feeds you. But they urge both sides, the government and the farmers, must find a resolution soon. तो आप लोग कहाँ रहते हैं? सिंघू गांव में रहते हैं मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। अच्छा, और आप क्या काम करते हैं? मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। तो अभी आप लोग तो बिल्कुल ही किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ रहते हैं, तो आपका इसको लेके क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत डिस्कशन हुआ है कि जो आसपास के लोकल लोग हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए मैम, हमारा मांग ये है कि भाई जैसे अगर इनकी मांगे पूरी कर देते हैं, शायद ये अपनी जायज़ मांगे मांग रहे हैं, लेकिन बाकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो तो मुझे लगता है गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पीसफुल तरीके से मांगे रखें। इतने दिन से बैठे हुए, इतने दिन से आराम से अपना वो कर रहे हैं, तो वो ठीक था, लेकिन जो 26 जनवरी को जो हुआ वो गलत हुआ है। और ये जो बड़े बड़े बैरिकेड आ गए हैं, वहाँ पे पत्थर लग गए हैं, इससे परेशानी हो रही है पब्लिक को, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी आप ये लगा लो ना, सिंघू गाँव से हमें फिर सिंगोला तक पैदल जाना पड़ता है, तो ये तो परेशानी है ही आम लोगों के लिए। तो मतलब ये जो बड़े बड़े बैरिकेड और दीवारें और आयरन रॉड्स और वहाँ पे स्पाइक्स और नेल्स लग गए हैं, उससे भी परेशानी है आपको? हाँ, उससे भी परेशानी है मैम। और सरकार के लिए संदेश? सरकार के लिए यही बोलेंगे कि जो जायज़ है वो मानी जाए इनकी मांगे, ताकि आगे पब्लिक को, जनता को भी परेशानी ना हो और इनका भी कोई दिल ना दुखे। बाकी किसान है, अन्नदाता है हमारे, जब तक ये नहीं करेंगे तो हम कैसे खाएंगे। Up ahead come the boulders and the walls, stacked up one after the other. Big, huge cement blocks. A crane hook forming a silhouette against the grey sky. The concertina wires and the men that stand guard behind them. A single helmet reminds us that this inflammable situation is easy for no one. Here at the Singhu border, like the other two borders with the capital city where the farmers' protests are taking place, you see obstacles like this one that have been placed at the entry to these borders. The idea obviously is to restrict movement, to not have a repeat of what happened on Republic Day, says the police. But the idea with these boulders and some very, very dramatic and disturbing pictures that have been coming up of spikes and nails and iron rods and cranes, the idea clearly is also to stop the inflow of farmers coming from other parts of India, Haryana in Uttar Pradesh in particular, to the 3 protest sites. They have been fortified in such a way that they look like complete conflict zones. In fact, I'll ask my camera to walk us through. You can see here on this side the sets of obstacles, the sets of big cement boulders, walls literally, that have been placed to try and create some sort of fortification around this main protest site that is known as the Singhu Border. And if you take a look at this side, you will also see a crane, you will see mounds of cement, of gravel. And I think the question that's being asked even by former senior police chiefs of Delhi is why this is necessary. What is this about? Is some sort of crackdown imminent, or is the police simply trying to contain the numbers that are able to reach the protest sites?
These ominous images from 3 different protest sites at the borders of the capital herald the possibility of a police crackdown. For now, however, here the security personnel seem just as unsure, just as confused about what to do next. The only thing they're clear about is that no one must be let in beyond this point. At the Singhu border, while you can see buses that belong to the police being allowed past these barricades, the rest of us, those in the media and those who are farmers or protesters or who may just want to come and observe what's happening here, cannot get through, at least by using this main entry point to the village where farmers have been on a sit-in for more than 2 months. So if you look behind me, the people who are actually going past these barricades are cops and people who are associated with them. We're going to try and ask him what exactly is the purpose of restricting movement and cordoning off this access point for journalists and media alike. सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे को क्या परमिशन है इससे आगे जाने की? नहीं मैम, सीनियर से मना किया अभी। और इसका क्या कारण है? अंदर की जो पिक्स हैं वो बाहर ना जाए, जो हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो बाहर ना जाए। तो आप चाहते हैं कि अंदर से कोई बाहर ना आए और बाहर से कोई अंदर ना आए? नहीं, अंदर से तो कोई है ही नहीं जो बाहर आएगा, सिर्फ पुलिस के अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा। तो हम लोग कोई दूसरा रास्ता लेके जा सकते हैं? बाहर से जा सकते हैं, कहीं दूसरा रास्ता है जी। So they are allowing media and there are diversionary sort of routes that may be allowed for the media to get in. But here at the main point, here at the main entry point, the only way you can get in is if you're with the police. And these are orders right from the very top, so that even little diversions that were once allowed to make one's way through to the protest site are now closed. The idea seems to be to contain the movement of farmers ahead of the big chakka jam that has been called for the 6th of February. And when we speak to the police, not everybody is comfortable with what's happening. They say that in the end, the response to what's happening at borders of the capital like this one has to be political. The police cannot carry the cross for the breakdown of conversation between the government and the farmers. After the violent clashes on Republic Day, when some protesters clambered up a pillar at the Red Fort and hoisted a religious flag, the police is taking no chances. Some are even armed, preparing for the worst, but others know that the use of any force will be nothing less than a calamity. Concertina wires, armed policemen, barricades, dug up grounds, cement walls, iron rods, nails, spikes, highways blocked. In the words of the former Delhi Police Commissioner Amod Kant, the police does have to do its job. The police is in a thankless situation, but some of these images, to quote him, are disturbing and horrifying. No, I think it looks quite horrifying, the entire situation there. In the sense that it appears that the police is back to the wall. I mean, they're trying to tackle this situation with no solutions being in their hands. Well, I think if I'm forthright and if I'm allowed to speak, I'll say that definitely the government has to find some way out. And the situation, probably the government also might let it go to a particular point. But then we don't want to create Tiananmen Square in Delhi or whatever. To reach the protest site, we must find a different way in. A long and winding road that curves around the location through fields and kacha tracks. So we jump across an open wide nala, holding on to thick electric wires for support. And we manage to find ourselves on the other side of a barricade. Here, we meet Lalu, the pakora seller from Uttar Pradesh, almost in tears. The hit to his income has been an impossible tragedy. First the lockdown during COVID, now a 2-month-long displacement. But he reminds us, he too is a farmer's son. He empathizes. लालू भाई, आप कहाँ से हैं? मैं जी इटावा से हूँ। उत्तर प्रदेश से? जी सर। और आप यहाँ पे पकौड़े बेचते हैं? जी, मैं यहाँ नहीं बेचता, मेरा 1 महीने से काम बंद है। अब बच्चे को क्या खिलाऊं सर, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा कर लिया, अपने 100-200 रुपये कम जाते तो उससे थोड़ा। तो आंदोलन से पहले क्या करते थे? आंदोलन से पहले जी उधर मैं यही काम करता था, वहाँ बंद हो गया, 2-3 महीने से मैं बैठा हूँ। तो आपके काम को नुकसान पहुँचा है? जी पहुँचा है। क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? जी बदलाव का नुकसान ही आया है, जो पूरा 1 साल हो गया जी, कुछ नहीं कमा पाया। अब इससे अच्छा, लॉकडाउन था पहले? हाँ, पहले लॉकडाउन था, घर चला गया, फिर आया, फिर ये लग गया जी।
क्या करूं जी, नुकसान ही नुकसान है। अभी ये 15-20 दिन से ये करने लग गया जी। मतलब पहले पकौड़े नहीं बेचते थे? पहले बेचता था, उधर लगाता था, जब से ये लग गया तब से नहीं बेच पा रहा हूँ जी कुछ भी। तो अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या हो रही है? अब मुश्किल क्या, अभी तो थोड़ा खर्चा चलने लग गया इससे। अच्छा, हाँ जी। तो आप ये किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? जी सोच क्या रहा, जो भी है ये खुल जाए तो बढ़िया ही है जी, और क्या है जी, इससे दिक्कतें हो रही, सारी पब्लिक को दिक्कतें ही हो रही है जी। तो किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सड़क बंद होने के खिलाफ जी। सड़क से थोड़ा दिक्कत हो रही है, और मेरे को किसानों, मैं भी तो किसान हूँ जी, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। आप भी किसान के बेटे हैं? जी सर। क्या खेती होती है गाँव में? गाँव में जी गेहूँ धान यही होता है जी। बहुत अपसेट लग रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। इस बार धान हुआ जी, कुछ नहीं पैदा हुआ उसमें, कुछ भी नहीं, तो इस वजह से फिर यहाँ भाग के आया, क्या घर पे खाता पीता। Indians are known to be innovative in the worst crisis. Hence, the jugaad, the colloquial word for finding solutions to the most intractable problems. That's on display here too. Rickshaw vendors have sensed a quick economic opportunity. And for 30 rupees a head, we clamber on to one of these, making our way over bumpy roads to the Singhu protest. At the protest site, the atmosphere is more like a carnival. It reminds us of the Diwali melas or fairs from our childhood. There's a makeshift mall, a roadside market selling jackets and coats. खरीद लिया? नहीं जी, नहीं। हाँ जी, स्मार्ट तो लग रहे हो आप, ऐसे स्मार्ट लग रहे हो, खरीद लो। An elderly Sikh massaging his battered old knees with oil, and posters of Bhagat Singh everywhere, even on the police barricades. This for thousands of farmers, most of them from Punjab and Haryana, at least here at the Singhu border, is home after all. Many of them have been living here for weeks altogether. And then, of course, there is food. How can there not be food? There's always food, and the promise that no one shall go hungry. हमारे गुरुओं ने यही हमें सिखाया है, जो भी आपके बाहर भी करे पहले उसको खाना खिलाओ, उसके बाद जो देखना है, पहले संगत फिर पंगत, हमारे गुरुओं ने सिखाया है। So this is the spirit of Sikhism. ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि चाहे हमारी लड़ाई भी हो पुलिस वालों के साथ, खाना उनको खिलाएंगे। खिलाएंगे ही खिलाएंगे। हमारे धर्म में कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमारा सबके लिए साझा है। जो भी आए हम बस आके लंगर छके, हम नहीं बोलते कि नहीं खिलाएंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, सबके लिए खिलाएंगे। Thousands of people have to be fed every day, and the scale of production at the langars is staggering. At this small makeshift kitchen behind a tractor, we meet these women from Haryana who knead 40 kilos of atta or wheat every day before the rotis are cooked over a coal-fired oven held up by stones and bricks. आप यहाँ पे रोटी बना रहे हो, कितनी रोटियाँ बनती है दिन में? दिन में हाँ मैं 40 किलो तो आटे की रोटी पवा, 40 किलो आटे की रोटी पवा इस टाइम। 40 किलो आटे की रोटी बनाते हैं रोज? हाँ रोज। मतलब 100 रोटी, 200 रोटी, कितनी रोटी? कितनी है बनाओ उसमें रोटी? Don't their children back home worry for them, I ask? No, even if we need to die, we won't move from here before justice is delivered, they say. तो मैं आपको थोड़ा पास में गणपति जी से थोड़ा मुलाकात कराना चाहती हूँ। अपने बारे में कुछ बताइए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? कैमरा को थोड़ा सा अगर हम यहाँ लाएं, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं बताइए। हमारा हाँ बच्चे हैं? बच्चे हैं जी। बच्चे क्या कहते हैं कि अम्मा बैठी है प्रदर्शन पे? बैठी लो। खुश है? हाँ खुश है। अच्छा अच्छा तेरी जान चली जाओ, चाहे हमने भी मरना हो, हमें आ जाएंगे। जितने दिन यू नहीं वापिस करेगा, हमें नहीं पूछे हटाएंगे। These images from Republic Day have caused anger and disgust among the people here as well. But everyone we meet blames Punjab actor Deep Sidhu and asks why he was given such a long rope by the Delhi police. अच्छा एक बात बताओ, जो 26 जनवरी को हुआ लाल किले पे, वो बहुत बुरा हुआ। हाँ बहुत बुरा हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। दीप सिद्धू किसका आदमी है? वो भी सरकार का आदमी है। आप दीप सिद्धू के बारे में जानते हैं? जानते हैं। तो फिर वो किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। In fact, the Indian tricolor is everywhere, woven into the very tapestry of this movement, worn as a badge of honor. ट्रैक्टर रैली और ये जो झंडा है, इसके जरिए आप देश के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? मैम अही हिंदुस्तान दे लोग हैं, ये झंडा साडी जान आ,
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾ। Many farmers in the movement, for instance Kartar Singh, have sons serving in the military. His is at the border with China. Of all states in India, it is Punjab that sends the maximum number of soldiers to the Indian army. And the one thing they all tell us is how angry they feel to be called Khalistanis. पंजाब के जो किसान हैं, उन्हीं किसानों के परिवारों में से फौज में बंदे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जवान जो है पंजाब से जाते हैं। तो एक जो आप लोगों को कई लोग कहते हैं भाई ये तो खालिस्तानी है, ये आपने भी सुना होगा, आपके बारे में कहते हैं। तो जब आपके बारे में आप ये सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बुरा लगता है। हम किसानी हैं, किसान से जो मांगे हैं वो मनवा के रहेंगे। आपको कैसा लगता है जब आप सुनते हैं कि भाई यहाँ के लोग, कुछ लोग खालिस्तान के साथ मिले हुए हैं, आपका नाम जोड़ते हैं, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना कि जो खालिस्तान के नाम से जोड़ते हैं वो बिल्कुल गलत जोड़ते हैं, क्योंकि जहाँ कोई खालिस्तान वाली बात नहीं है ना कि जहाँ सभी भाई भाई के रूप में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का बिलोंग करता है। दिस इज जस्ट कॉल्ड एज ए propaganda. But ethnic identity and cultural assertion, whether among the Sikhs here or the Jat mobilization at the other border with Uttar Pradesh and Ghazipur, is real. Villages in Punjab who've been sending at least 2 tractors a day filled with volunteers to Singhu tell us as much. बिल्कुल मैम, एक फकर भी हैगा, एक प्राउड भी हैगा या ते किदां भी हैगा। हाँ, जुल्म के खिलाफ सानू चाहे कोई बड़ा होवे अगे या कोई छोटा होवे, किसी नाल टक्कर लेनी पवे तां लेनी चाहिदी। सानू एक बंदे नूं आवाज़ उठानी चाहिदी है, मुड़ के हौली हौली उहदे नाल 100 हो जांदे नहीं। Despite the festive energy, everyone, the police, the protesters and the leadership, knows that the situation is inflammable. Just a few days ago at the Singhu border, there was stone pelting and simmering tension, even clashes. This Reuters photograph captured a horrific moment when a protester raised a sword at a police official. Recovering from these injuries, the SHO received an apology call from the farm movement leader Yogendra Yadav, who insisted, however, that the assailant was not their man. But in a leaderless movement where no one person has emerged as a key authority figure, anything can happen anytime. A matchstick can start a forest fire. For the farmers here, Modi is the message. They want the Prime Minister's direct intervention. They see him as the only man who matters in the government. And yes, they will welcome him at their langar. मोदी जी अगर यहाँ आए तो जलेबी चाय खिलाएंगे अपने? हाँ खिलाएंगे, हाँ खिलाएंगे, खिलाएंगे, स्वागत कराएंगे। मोदी जी मोदी जी हाँ, वो तो इंसानियत है, इंसानियत है। यहाँ पे इधर आइए, आप बता रहे थे। हाँ बताइए, मोदी जी अगर आए चाय और लंगर पे? हाँ, चाय और लंगर सभी के लिए है, कोई भी आ जाए। जलेबी खिलाएंगे उनको? बिल्कुल खिलाएंगे। लड्डू भी खिलाएंगे, आप बोलो। जलेबी भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, पकौड़े भी खिलाएंगे। The women from Haryana too say their kitchen is open for the Prime Minister. Singhu border then awaits a visitor. And if not a visit, at least the Prime Minister's intervention. Till then, the farmers say they will stay right here, making their beds on stone and gravel at the back of trucks and under tractors in the hope that a new morning may yet bring a new beginning.